Bitcoin's legal status, interest rate hike, quantitative tightening, geopolitical concern between all the major countries. So far, few of the most important points जिसके चलते मार्केट नीचे गिरा है, जिसके चलते बिटकॉइन नीचे गिरा है. I'm going to give you all the technical data you need to know right now related to the market. This is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. Super Sunday, super important video for all of you. So let's get forward, guys. So I'm going to show you RSI, MACD, Bollinger Band, and few other important data. After that, you all decide that what we should do right now, what should be our position right now, what should be our command right now. So let's get forward, guys. Stick to this video till the very end. Trust me, you will learn something new. So this is Bitcoin's weekly chart. So let's start with the RSI. The most commonly used term, the most commonly used indicators. Let's start with the RSI, weekly candlestick RSI. And इधर का जो data है, why I'm using this chart? Because ये chart का data एकदम जमाने भर का मतलब last 10 साल का पूरा जो data है ये chart में है. That is why I'm using this chart. Let's start from this 2015, 12 June, then 3rd December 2018 and recently 13th June 2022. ये तीनों टाइम RSI सेम लेवल पे टच किया है. ऐसे देखा जाए तो रिसेंटली 13th जून 2022 का जो RSI का टच पॉइंट है which was lower than any other time in the history of Bitcoin. Can you just imagine? Involvement लास्ट 3 से 4 साल में जितना बड़ा है, volatility भी उतना ही बड़ा है. This entire story shows that जो भी बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी स्पेस पे आया है, they all have came for just to earn some quick bucks, to gamble on it. Just look at this 2018 3rd December. Look at the RSI just right above this dot line, which is just above 25, maybe around 30. Same as 12th Jan 2015, just touching this 30 wala RSI line. And look at this 2022 13th of June. कितना नीचे है देखो RSI line. So it seems like RSI जितना नीचे रहेगा, which shows oversold, which shows this is a perfect time to buy in. This is the first indicator which shows that कोई भी stock, it's not about Bitcoin, कोई भी stock, maybe they are near to the bottom. This is again the weekly MACD. इसमें भी हम लोगों को ये पता चलता है कि oversold, market bottom और market top. तो MACD 2014 में भी 2013 का भी डेटा साइट पे मिल जाएगा, लेकिन 2014 से स्टार्ट करके 2021 इतना नीचे RSI कभी भी नहीं गिरा है. इतना ही हाइट का ऊपर गया था 2021 पे ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक टाइम, बट उसके बाद वही सेम जो हाइट ओवरबॉट पे था वही सेम हाइट अभी ओवर सोल्ड पे है. We are expecting same effect. ओवरबॉट के बाद जैसे नीचे आया है, ओवरसोल्ड के बाद भी ऊपर जाने का एक चांसेस है. So another reason I'm going to give you to think positively. Now let's go forward. Now look closely. This is one of my favorite part in any chart, which is finding the divergence. मतलब MACD and RSI को चेक करके उसको चार्ट के साथ जो कैंडलस्टिक है उसके साथ कंपेयर करना. So just look at this. The first line is MACD, the black line is RSI, and ऊपर में we have our candlestick chart. तो कैंडलस्टिक चार्ट पे जहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वैसे सेम जगह पे सेम मूवमेंट पे RSI एंड MACD पे ऑलरेडी एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है. MACD तो छोड़ दो, 0 के नीचे था. RSI जो 25 के नीचे आ गया था वो धीरे धीरे अबव 30 जा रहा है. बट अगर कैंडलस्टिक चार्ट के साथ कंपेयर करें, इट इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड. दिस शोज अ क्लियर डाइवर्जेंस. We call it the bullish divergence. Bearish divergence एकदम उल्टा होता है. Just look at this bearish divergence. 2021 जून जो सबसे टॉप गया था $64,000 बिटकॉइन का प्राइस. Look at that MACD, blue line and red line. It was at the top. It was touching 1000. Then 2022 का जो न्यू ऑल टाइम हाई बना $69,000. $69,000 पे रहते हुए look at this MACD, that red and green line which is way below than the previous MACD when Bitcoin's price it was at $64,000. तो हिसाब ऐसा बोल रहा है कि $64,000 जहाँ पे होना चाहिए $69,000 उसके ऊपर होना चाहिए, यही हिसाब बोल रहा है. बट सिंस दिस वाज अ डाइवर्जेंस कि इसके बाद MACD और नीचे आने वाला है, मार्केट गिरने वाला है.
सेम वे जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, सेम वे एक डाइवर्जेंस चार्ट पे दिखाई देता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन मैकडी एंड आरएसआई पे चार्ट ऊपर जा रहा है. दैट इज द बेस्ट पार्ट टू नो दैट मार्केट इज टर्निंग टुवर्ड्स बुलिश. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द MBRVZ स्कोर. तो ये क्या दिखाता है? दिस इज अ ऑन चेन मेट्रिक दैट रिफ्लेक्ट्स अ रेशियो टू बिटकॉइन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेंस्ट द रियलाइजेशन कैपिटलाइजेशन, द अमाउंट पीपल पेड फॉर बिटकॉइन कंपेयर टू इट्स वैल्यू टुडे. मतलब जब बिटकॉइन का प्राइस $69,000 पे था और अभी जो बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के आसपास है, सो यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन. एक साल पहले आप $69,000 पे करके जो एक बिटकॉइन मिलता, आज $20,000 पे करके भी आपको वही एक सेम बिटकॉइन मिल रहा है. सो इट शोज कि मार्केट में आप जितना पैसा पे कर रहे हो बिटकॉइन के लिए, क्या वो ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है. तो जब ये रेड जोन है, ये चार्ट के जो रेड जोन दिखाई दे रहा है, रेड बैंड, ये रेड बैंड पे जब जब कैपिचुलेशन लाइन गया है बिटकॉइन का, जो ये जो ऑरेंज लाइन ऐसे ऐसे उठ के गया है, ये दिखाता है कि बिटकॉइन ओवर प्राइस्ड है. मतलब आप उस टाइम पे जो खरीद रहे हो वो आप ज्यादा पैसा देके खरीद रहे हो. वाइस वर्सा, जब बिटकॉइन का प्राइस, जब ये ऑरेंज लाइन ग्रीन जोन टच करता है, इट सीम्स इट इज हाईली अंडर वैल्यूड एंड यू आर बाइंग इट ऑन सेल. तो सेम जोन, दैट ग्रीन जोन अभी हम लोग जहां पे टच कर रहा है, दैट नोन टू बी द बेस्ट प्लेस टू बाय बिटकॉइन एट एनी टाइम. बाय एंड accumulate, buy and accumulate. Look at this, 2012, 2015, 2019, 2020, just before that bull run. Every time Bitcoin जब ये green zone पे आया है, this was the bottom and this was the best place to accumulate Bitcoin for the long run. So another good view to change your perspectives to bullish perspectives. Same thing again, it's again our red and green zone. Reserve risk मतलब same. Accumulation zone मतलब it's not good time to buy and accumulate. जब ये green zone पे, it's always the best time to buy and accumulate. Look at this 12, 16, 14, 2020 and right now we are at the same zone. ऐसे देखा जाए तो we are at the worst zone right now. क्योंकि ऐसे जगह पे लास्ट बिटकॉइन का हिस्ट्री में कभी भी बिटकॉइन ये वाला जोन टच नहीं किया है. So every metrics, every on-chain data, every on-chain, whatever technologies we have, everything is showing that Bitcoin is at a position जहाँ से it can bounce back anytime. Mostly bounce back करे या ना करे, sideways चले, कुछ हो या ना हो, इससे नीचे मतलब significantly इससे नीचे नहीं जा सकता है. We are at the position जहाँ पे हर एक मैट्रिक्स, हर एक डेटा, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ टूट चुका है. इससे नीचे गया मतलब जीरो पे गया. That's it from my side, guys. Thank you for watching. Thank you for being here. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, enjoy your Sunday video, Sunday evening. फिर से मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ. Till then, take care. Dev signing off.